हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जैम 2010 का क्वेश्चन सॉल्व किया था। ऑब्जेक्टिव ही कर रहे हैं इधर सब्जेक्टिव वाला पार्ट अभी नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट ईयर जो तैयारी करें उनको हम करवा देंगे बाद में सब्जेक्टिव भी। तो ऑब्जेक्टिव वी आर डूइंग ऑब्जेक्टिव 2005 से लेके 2014 तक का जो है ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव ही हो गया है पूरा। ठीक है, तो आज हम लोग 2009 का पेपर करेंगे 1 to 15 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और अब ज़्यादा पेपर बचा नहीं है, 8, 7, 6, 5 तक ही है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस 2009 पेपर। कहाँ गया पेपर? ये रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यही प्रिंट मिला इंटरनेट पे। ठीक है, टाइप करवाए होंगे लेकिन मिल नहीं रहा है। Isothermal compressibility Kt of a substance is defined by Kt equals to minus 1 by V dV by dP. Its value for n moles of the gas will be. Its value for n moles of the gas will be. तो ये जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, when you apply pressure, the volume decreases. तो dV by dt, the amount of volume decrease per unit the pressure change, that is defined by this. dV by dP क्या है? The rate at which the volume decreases as you increase pressure, right? तो ये इनहेरेंटली नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस साइन लगा के इसको जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग पॉजिटिव कर रहे हैं। 1 by V makes the whole thing independent of the size of the system. Okay, so ये क्वेश्चन करिए, देखिए क्या पूछ रहा है। आइडियल गैस का पूछ रहा है ना, Kt आइडियल गैस का। आइडियल गैस में क्या होता है? You have the in ideal gas you have this ideal gas equation. They follow ideal gas equation, PV equal to nRT, right? And I can write V as nRT by P. So dV by dP at constant pressure will be nRT by P square, and we have to divide by volume 1 by V. समझ में आ रहा होगा आप लोग को, nRT by P square and 1 by V. ठीक है, तो V का वैल्यू पुट कर देता हूं ऊपर से, nRT by P, it is nRT by P, so this will cancel out, so this will be minus 1 by P. So your Kt is nothing but minus of 1 by V dV by dP at constant pressure, at constant temperature, and this is 1 upon P. तो A आपका सही आंसर आ जाएगा। A will be the correct answer. A will be the करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। द स्पेस क्रू हैज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट कैन लास्ट ओनली फॉर 1000 आवर्स। मतलब स्पेसशिप में जो क्लॉक है वो जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम मेजर कर रहा है वो 1000 आवर्स मेजर कर रहा है। What minimum speed would be required for safe travel of the crew between two space stations separated by a distance of 1.08 into 10 to the power 12 kilometer? दो स्पेस स्टेशन है, you have two space station, say one space station is S1 and other space station is S2, और इनके बीच में ये जो एरोप्लेन नहीं बोलते हैं उसको, स्पेस शटल बोलते हैं। ठीक है, इसको जाना है यहां से यहाँ, दूरी इनका दिया हुआ है लैब फ्रेम में, दैट इज 1.08 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो मीटर में कर देंगे तो 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो इसका स्पीड v है। ठीक है, तो जो ये 1000 आवर जो लाइफ टाइम है दैट इज मेजर्ड बाय द क्लॉक विच इज देयर विद द स्पेसशिप। ठीक है, बट व्हेन अ स्पेसशिप मूव्स दैट क्लॉक विल मूव and the time measured by that clock will get dilated, right? तो ये आपका जो 1000 आवर है वो प्रॉपर टाइम है।
1000 hours is proper time, ठीक है. It will get dilated as a spaceship moves with velocity v. This will get dilated, and dilated lifetime is going to be this. लाइफ सपोर्ट सिस्टम का जो लाइफ टाइम है, आवर्स में, तो इसको हम लोग सेकेंड में कर दो तो ये आ जाएगा सेकेंड. ठीक है. अब v वेलोसिटी से इतना टाइम तक मूव करेगा तो ये होना चाहिए. मतलब कहने का मतलब ये है v मल्टीप्लाइड इंटू डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू दिस डिस्टेंस 1.08 इंटू 10⁻12. अगर मान लो कि जस्ट रीच करता है सेफ ट्रेवल, क्योंकि आपको मिनिमम पूछा है, ठीक है, मिनिमम पूछा है, तो आप कह सकते हैं कि v इज must be greater than 1.08 into 10⁻12 delta t. If I want v min, तो that is going to be this. मिनिमम वैल्यू तो यही हो जाएगा ना, ग्रेटर इक्वल टू है तो मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा. अब डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज 1.08 into 10⁻12 and 1000 4 0 और 3 0 0.36 sorry 10⁻12 10⁻15 sorry 4 0 और 3 0 7 and तो ये क्या हो जाएगा? 36 दिए 108 और ये आ जाएगा. सो इन अ वे दिस इज C. 3 to 10⁻8 तो C हो गया ना, राइट. सो लेट्स टेक C on the left hand side, square it. So twice of v square by c square is going to be 1, or v is going to be c upon root 2. V is going to be c upon root 2. B would be the correct answer. B would be the correct answer. Clear है? ठीक है. ये देखिए क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट करंट में क्वेश्चन आता रहा है, मतलब काफी नहीं, पीछे भी हम लोग देखे तो डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्वेश्चन आया था. देखो क्या बोल रहा है. An oscillating voltage Vt equals to V naught cos omega t is applied across parallel plate capacitor having the plate separation d. The displacement current density through the capacitor is. मैं आपको पहले ही बताया था, अगर यहाँ पे एयर है या नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक है, उस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होगा दैट विल बी जस्ट इक्वल टू कंडक्शन करंट. इफ दिस इज डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन करंट, मतलब ये तो ऑल्टरनेटिंग है, मतलब हाफ साइकिल ये हाफ साइकिल उल्टा रहेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट. इसको मैंने प्रूफ करके भी पहले बता चुके हैं, एक दो बार बता चुके हैं आपको, ठीक है. बाकी अगर प्रूफ नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम सब बता देंगे है? फिर से पहले वाला अगर ट्रैक कर रहे हो तो पढ़े, एक वीडियो में हम बताए भी हैं कि IC इक्वल टू ID क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है. और लास्ट वीडियो में ये भी बताइए कब नहीं होगा, ठीक है. So let's okay, so I won't repeat. So this is ID is IC and IC is dq by dt. ये करंट cannot be flow in discontinuity, मतलब करंट का फॉर्म बदल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पे कुछ और है यहाँ पे कुछ और है. एनर्जी हैज टू फ्लो इन कंटिन्यूटी. करंट इज a kind of mechanism through which the energy flows from battery to the loads. Okay. So displacement current density पूछा है, कोई नहीं, displacement current निकाल लो पहले. So this will be what? D by dt of Q will be what? Q will be equal to CV, and C is epsilon naught A by D, and V is V naught cos omega t.
So this is going to be epsilon naught A V naught upon D omega minus sine omega t. So JD is going to be simply ID upon area of the capacitor plates. This is epsilon naught V naught D माइनस साइन, माइनस यहाँ से आ रहा है, cos ओमेगा टी को डेरिवेटिव लेने से माइनस साइन आ रहा है. This will be answer. So D is correct answer. D is अच्छा 3-4 बार देखो, अभी तक हम देख चुके हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हुए, ठीक है. So this is also important. ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है. द स्फेरिकल न्यूक्लियाई हैव मास नंबर्स 216 and 64 with their radii R1 R2 respectively. The ratio of R1 by R2 is. देखिए, you must know that the radius of the nuclei is basically have this kind of dependence, where R0 is say 1.1, 1.2 femtometer in this range. So if I talk about R1 by R2, then that is A1 by A2 1 by 3, or this will be 216, this will be 6 upon 4 or 3 upon 2, 1.5. सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है. और उस समय देखो जैम के लिए कोई स्टडी मटेरियल नहीं हुआ करता था, ठीक है. हम तो देखो 2005 से पढ़ा रहे हैं, 2007 में मैंने ट्रेजेक्टरी एजुकेशन सेटअप किया, तो उसके पहले एक छोटा सा कोचिंग हुआ करता था, कोई जानता नहीं उसको, मतलब तो 2005-06 तो वहाँ पढ़ाते थे. उसके साथ में मैंने अपना सेटअप किया था, तो उसमें कोई मटेरियल नहीं होता था. तभी आई रोट अराउंड 13 बुक्स फॉर IIT जैम एंड 4 बुक्स फॉर CSIR नेट और 8 बुक्स फॉर IIT जैम मैथमेटिक्स. तो उसमें कोई मटेरियल नहीं होता था, और चूँकि कम बच्चे बैठते थे तो हम किसी पब्लिशर को बोलते थे कि लाओ तुम्हारा किताब लिख देते हैं जैम पे. कोई रेडी नहीं होता था कि भाई आपका तो बहुत कम बच्चा बैठता है तो इतना मेरा बुक बिकेगा नहीं. तो मैंने फिर अपना पब्लिकेशन सेटअप किया एंड आई पब्लिश्ड बुक, राइट, संवेदना पब्लिकेशन. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. देखिए क्या बोल रहा है, बड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है क्या ये देखिए फूरियर सीरीज का क्वेश्चन है. हर साल देखो एक क्वेश्चन फूरियर सीरीज का आता है, तो इसको बिल्कुल कर लीजिए आप, ठीक है. मोबाइल पर मैसेज आ रहा है. ठीक है. सो लेट्स डू दिस. क्या बोला है, साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स फंक्शन दिया हुआ है. अब देखो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन. साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, sin minus x is minus of sin x, but modulus of sin x will be even function. वो यहाँ ग्राफ में दिख भी रहा है. देखिए आप यहाँ पे आपका जो ग्राफ है, it is symmetric about y axis. If graph is symmetric about y axis, that means the अगर कोई x पे वैल्यू ये है sin x का, तो माइनस x पे वैल्यू सेम रहेगा. मतलब sin minus x modulus will be equal to sin x. ठीक है, मतलब ये इवन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिक है ना, वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है. सो वट एवर वैल्यू यू हैव एट एक्स, द सेम वैल्यू हैव एट माइनस एक्स, राइट. सो द ग्राफ इज सिमेट्रिक, दैट शोज कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज इवन फंक्शन. और ऐसे भी पता है हम लोग को, साइन 30 लोगे 1/2 है, साइन -30 -1/2, बट मॉडुलस विल मेक इट 1/2. ओके, सो इन दैट केस दिस इज फूरियर सीरीज. क्या होता है, you have a naught by 2, or in this case I write alpha naught by 2 plus alpha and cos nx n equal to 1 to infinity
and then you have beta n sin nx. तो अल्फा एन का वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी बीटा बोल रहा है कौन सा कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, मतलब नॉन जीरो. तो बीटा एन तो नेगेटिव होगा. व्हाई? बिकॉज इफ आई डू दिस इज द फार्मूला. So what do you find? This is odd function. Modulus of sin x is even function. Sin nx is odd function. So odd function into even function will be odd function. And you have the limit minus something to plus something. So you know this property that if fx is odd function, this is 0. If fx is odd, and this is twice of if fx is even, right? So beta n will be 0. Beta n will be 0. Let's talk about alpha n. What is alpha n? Alpha naught निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है. Alpha n will be non-zero of course, but alpha n का दो ऑप्शन दिया हुआ है, odd n, even n. इसमें देखना पड़ेगा. So it is 1 upon pi sin x and you have cos nx. So they are even function. Modulus of sin x is even, cos nx is even. So even into even is even function. But you have minus pi to plus pi. So this is even. So I can use the identity of a definite integral. And this will be dx. Right? So fine. So we have a property, आप बचपन में पढ़े होंगे, is sin a plus p plus sin a minus p. Right? So we will use this property. We have 2 sin x cos nx. So we will use the property. This will be 2 को अंदर ले लिया जाए, ठीक है. You have 0 to pi, so you have a sin 1 plus nx and plus sin 1 minus nx dx. इसको इंटीग्रेट करो. So we have 1 by pi and sin nx, sin इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, cos 1 plus nx upon 1 plus n. ये हो जाएगा माइनस ऑफ, और लिमिट पुट कर दो 0 to pi. जब लिमिट आप पुट करोगे इसे हटा रहे हैं, ठीक है. So if I put the limit, what do I get? Alpha n is, I take minus pi outside. So I'll have cos of, right, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये सब प्लस हो जाएगा ना, माइनस x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, you have 1 plus that, then we have cos of and minus this. Now you see we have a property that cos pi plus x is minus cos x. So we will use that property. You have pi plus n pi. Pi plus cos pi plus n pi. So it is minus cos n pi. So you say minus 1 by pi. So you have minus cos n pi. 1 plus n. 1 plus n. And minus pi minus n pi. Cos pi minus n pi. So this will be what? Minus of cos minus n pi, and cos minus n pi is plus n pi. Right? Sorry, but cos minus n pi is cos plus n pi. Cos is even function, right? Cos minus x is cos x. So this will be cos right. Okay, so
I'll make everything positive inside. So we have what? 1 upon pi and cos n pi, 1 plus n, 1 minus n, and here we have, so I'll take this out, 1 upon pi. You can solve it also. And here we have 1 plus cos n. Yeah. So this is, in fact, I can put it here, minus what? 1 minus n, 2n. And you see this is non-zero for even n, and this is 0 for odd n. Cos 3 pi is minus 1, cos 5 pi is minus 1, cos 4 pi is plus 1, cos 2 pi is plus 1. So alpha n will be non-zero for even n. Alpha n will be non-zero for even n. Clear है? Alpha n will be non-zero for even n. थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें. छठा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. A particle is moving in a space with O as the origin. Some possible expression for its position, velocity and acceleration cylindrical coordinate are given by. ये तो आपको याद होना चाहिए भाई. देखिए, you have in cylindrical polar coordinate, you have the three coordinates rho, phi and z. So r vector is given by rho e rho, rho e rho plus z ez. Ez is k vector basically, and the velocity is dr by dt. So this is rho dot e rho and rho phi dot e phi and z dot ez simply, right? क्या पूछा? एक्सेलरेशन भी लिख देते हैं हम. सब याद कर लो, डेरिवेशन हमने थ्योरी में करवा रखा है. इनफैक्ट ऑनलाइन कोर्स किए होंगे वो देखे होंगे. रो डबल डॉट आर डबल डॉट आर आर क्या होता है? आर वाला याद रहता है हमको. अच्छा, रो डबल डॉट एंड आर डबल डॉट आर स्क्वायर थीटा डॉट प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट. एक्चुअली सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट प्लस कार्टेशियन सेट, राइट? तो यहां से हम एक बार सॉरी ये गलत है, ओमेगा स्क्वायर. तो यहां से कॉपी करते हैं. रो को आर से रिप्लेस कर दिया, रो पाई डॉट स्क्वायर phi plus 1 by rho. This is plane polar, right? So Cartesian is cylindrical polar is nothing but plane polar, spherical plane polar, not spherical, plane polar, two-dimensional plane polar of course, and Cartesian z. So d by dt of rho square phi dot e phi and z double dot ez. देखो कौन सा मैच कर रहा है? ए गलत है, बी सही है. ये वेलोसिटी सही है, ये ठीक है. डी बाई डी टी ऑफ डी स्क्वायर जेड बाई डी टी ठीक है. बाकी डी बाई डी टी ऑफ आर, ये तो है ही नहीं. रो फाई डॉट स्क्वायर, रो फाई डॉट स्क्वायर नहीं है. अच्छा, ये जो इजी वाला पहले देख लेते हैं. ये सही है, ठीक है. ये नहीं आ पाएगा
acceleration will not reduce to this. This is correct. Match. Velocity is d rho by dt rho phi dot. ठीक है, ये सही है. C is correct. C is correct. C is correct. ये तो पोजीशन वेक्टर ही गलत है ना आपका. ये पोजीशन वेक्टर गलत है, ये पोजीशन वेक्टर गलत है. ठीक है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ये नहीं रिड्यूस हो पाएगा. करके देख सकते हैं. तो सी आंसर हो जाएगा. 6 का सी आंसर हो जाएगा. ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सातवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. विच आर फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन. इनकरेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन काम बढ़ा देता है ये इस तरह का क्वेश्चन है. P bar Q and PQ is what? P bar Q plus PQ is P bar plus PQ. So this is Q. P plus P bar is 1, right? अच्छा, ये देख लो. P plus Q bar and P plus Q is what? P into P is P, PQ, Q bar P and Q bar Q. So Q bar Q is 0, right? And here P1 plus Q is 0. Sorry, let's write like this. Sorry, P plus. So this is P plus P, Q plus Q bar, and Q plus Q bar is 1. So yeah, P plus P, P. 2P तो होता नहीं है. Is P. Or we have a formula. You can simply do this using formula. We have A plus BC is what? A plus BC is A plus P, A plus C. So you just use it. This will be nothing but P plus Q bar, right? A plus B, A plus BC is A plus B, A plus C. So you are given A plus B, A plus C. So it is P plus Q bar, and this is 0. This is correct. This is correct. ठीक है, और ऐसे भी कर सकते थे. Now we have C. C is what? P plus PQ. ये इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट है. ये आ जाएगा. ये देखो चेक करके एक बार. इन दोनों को क्लब करो. वी हैव व्हाट? पी क्यू आर बार प्लस आर. इन दोनों को क्लब करो. वी हैव पी क्यू बार आर बार प्लस आर. सो आर बार प्लस आर इज 1. सो दिस वी हैव पी बार क्यू बार पी क्यू बार. दिस इज P bar plus P Q bar, and this is Q bar. So this is also correct. So C is incorrect. C is your answer. C is incorrect. तो C ही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, C will be answer. आठवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. Monochromatic X-ray of wavelength 1 angstrom are incident on simple cubic crystal. The first order Bragg reflection from a 311 plane occurs at an angle 30 degree from the plane. The lattice parameter is. Bragg's law पे simple question है, formula based. Bragg's law tells you what? हर साल क्वेश्चन आ रहा है देखो. 2DHKL sin theta equals to n lambda. DHKL क्या होता है यार? A is given to you. नहीं, A निकालना in fact. So DHKL is A upon for cubic crystal. A, B, C are all same. So HKL is 311. So this is 9 plus 1 plus 1 means it is A upon root 11. Right? So twice into A upon root 11. और थीटा क्या दे रखा है आपको? 30 डिग्री. और कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर. n is 1 and lambda is yes. So 2 into sin 30 will cancel out. Sin 30 is 1 by 2. So A is
रूट एन है लैम्डा, एंड लैम्डा इज, जो लैम्डा का यूनिट लेंगे वही आपका ए का यूनिट हो जाएगा. सो लैम्डा इज 1 एंगस्ट्रॉम, सो इट विल बी दिस एंगस्ट्रॉम. ठीक है. D is correct answer. D is the correct answer. Okay. क्वेश्चन है भी सब. मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया एक्चुअली. चलो आगे करते हैं फिर इसको. ये कर लेते हैं नवा क्वेश्चन. ये देखिए क्या था. The electric field E is given as this. What will be total charge enclosed in a sphere of unit radius centered at origin? Simple question है. A sphere of unit radius centered at origin. So your n cap is what? This is your R. This is your ER cap. And ER cap is same as n cap because sphere में radial vector जो होता है वो surface के perpendicular होता है. So your Q is what? Epsilon naught flux. So this is 1 by R alpha ER vector beta sine theta cos phi and E phi dot n cap ds. And you n cap is ER cap for sphere centered at origin. For sphere centered at origin, and you must know that ER, E theta and E phi are mutually orthogonal, just like I cap, J cap, K cap. So ER cap dot E phi cap will be 0. ER cap dot ER cap will be 1. So you'll have epsilon naught 1 by R alpha ds because ER cap will be 1, E phi cap, ER cap will be 0. They are orthogonal, right? And since this is sphere of unit radius, so on the sphere R will be just 1 constant value, R will be constant, and that constant is 1 basically because radius 1 दिया हुआ, unit radius दिया हुआ. So this 1 by R will come out and R will be 1, right? So this is epsilon naught alpha ds, or this is epsilon naught alpha 4 pi 1 square. 4 pi 1 square. So it is 4 pi epsilon naught alpha. 4 pi epsilon naught alpha. Okay. It will be 4 pi epsilon naught alpha. Getting your point? इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सवाल पूछेंगे. देखो क्या बोल रहा है. A thin massless rod of length 12 has equal point masses m attached to its end. The rod is rotating about axis passing through its center and making angle theta with it. The magnitude of rate of change of angular momentum dl by dt is. See, ये थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे आप एमएससी लेवल पे. It is this. So L क्या होगा? देखो, this is your omega. So L is what? L is I omega. ओमेगा का दो कॉम्पोनेंट, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर से कर सकते हैं. One will be omega cos theta, other is omega sin theta. But see, along this direction, you don't have any moment of inertia. These are point masses. These are point masses. Along this omega cos theta, you don't have any moment of inertia. About this, you have the moment of inertia 2 ml square. So I'll say L is 2 ml square
omega sine theta. And if I take that direction as say n cap, right? So I can write like this. You understand? Omega cos theta, you don't have any moment of inertia along omega cos theta. You have the moment of inertia over this axis, and over this axis, moment of inertia is what? It is 2 ml square, right? So I'll put here omega vector 2 ml square omega sine theta n cap, and this n cap and omega, the angle is what? Pi by 2 minus theta. So this will be 2 ml square if I want the magnitude. This is 2 ml square omega square sine theta and omega vector and n cap. What is the angle? Pi by 2 minus theta. So this is sine pi minus theta. So this is 2 ml square omega square sine theta cos theta. So A is going to be the answer. I hope this is clear. A is going to be the answer. You can try the same question using moment of inertia tensor. You can try the same question using moment of inertia tensor. That will be lengthy, but that will be good. Right? करिएगा इसको. ठीक है? Just do this. एक अलावा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. A battery of constant EMF a battery with a constant EMF E and internal resistance Ri provides power to external circuit with a load resistance made up of combining resistance RL and 2RL in parallel. For what value of RL will the power delivered to the load will be maximum? एक देखो मैक्सिमम पावर थ्योरम होता है. देखो अभी तो हम बना देते हैं इसको, बाकी इसको प्रूफ करना आप लोग कभी. लोड आपका क्या है? RL और 2RL, और इधर आपका बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो Ri है, ये बैटरी है. ठीक है. तो मैक्सिमम पावर थ्योरम ये बोलता है कि बैटरी इज गोइंग टू सप्लाई मैक्सिमम पावर इफ द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. लोड रेजिस्टेंस क्या है? नेट लोड रेजिस्टेंस क्या है? RL इंटू 2RL and RL plus 2RL. So it is 2 by 3 RL, right? It is 2 by 3 RL, and you have internal resistance with a battery. This is Ri, this is E, right? So the power delivered will be maximum if the load resistance, ये maximum power theorem है, इसको प्रूफ भी करके देखना आप. ठीक है, और नहीं तो याद भी कर लो. तो RL will be 3 by 2 RL. D आंसर. ठीक है, D will be the correct answer. मैक्सिमम पावर थ्योरम याद रखिए, बढ़िया रहेगा. प्रूफ भी कर लीजिएगा और बढ़िया रहेगा. 12 नंबर देखो क्वेश्चन. ऑप्शन नहीं दिख रहा था एक्चुअली, छोटा नहीं भी करना चाहता है. Among the following displacement versus time plot, which one may represent a overdamped oscillator? देखो ऑसिलेटर में 3 केस हो सकता है: क्रिटिकल डैम्पिंग, लाइट डैम्पिंग एंड ओवर डैम्पिंग. तो क्रिटिकल डैम्पिंग में तो ऑसिलेटरी रहेगा, सॉरी लाइट डैम्पिंग में तो ऑसिलेटरी रहेगा विद डिकेइंग एम्पलीट्यूड, जैसे ये वाला है आपका. दिस इज द केस ऑफ लाइट डैम्पिंग. ओवर डैम्पिंग में क्या होगा? यू डोंट हैव एनी ऑसिलेशन. You take the particle to extreme position and leave it. It will slowly return back to equilibrium position. Like you have this case, you take to the extreme position and just release it. It will slowly return back to equilibrium position. So this is overdamped. So this is also overdamped.
Initially, the particle is away from the equilibrium. You just displace it more, right? And you reach the extreme and then it start decaying, right? ये तो बहुत ज़्यादा डिके कर रहा है। ये भी ओवर डैम्प्ड है, बस ग्राफ इनिशियल पोजीशन का अंतर है। यहाँ क्या है कि एक्सट्रीम पोजीशन में ले लिया और छोड़ दिया, तो ये डिके। तो बस इनिशियल, यहाँ पे इनिशियली 0 पे है, एक्सटेंड किया फिर छोड़ दिया, है ना। तो ये तीनों ही आपका ओवर डैम्प्ड का केस है, ठीक है। PRS, ये ऑल द 3 आर ओवर डैम्प्ड केस। ऑलराइट, ठीक है। चलिए कर ही लिए पूरा, लेट हो रहा था। अब हो ही जाएगा, बच्चा नहीं है कुछ। हाँ देखो, a wave packet in certain medium is constructed by superimposing wave of frequency omega around omega naught and corresponding wave number k with k naught equal to 10। ये टेबल दे रखा है आपको, ठीक है, ओमेगा और के का। फाइंड द रेशियो ऑफ Vg अपॉन Vp ऑफ ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी क्या होता है? इट्स ओमेगा बाई के। फेज वेलोसिटी इज ओमेगा बाई के। तो कोई भी वैल्यू ले लो बीच का कहीं पे, जैसे ये ले लो, मान लो, या ये ले सकते हो, कोई भी ले लो। सो ओमेगा इज 100, रफली करीब करीब यही आएगा, 10 है। इसको भी डिवाइड करोगे तो रफली वही आएगा, मतलब 10 के आसपास ही आएगा, 90.25, 9.5 है ना। सो दिस इज 0 एंड दिस इज 1895, 1805, 190 है ना। तो करीब 9 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। सो रफली 9.78 ऐसे कुछ आएगा। ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। ओके, सो अराउंड 10। इसको भी 10 से गुना करोगे तो लगभग यही आएगा, 105 हो जाएगा ना, 110 है। इसको भी 10 से गुना करोगे तो 110 आएगा। 9.7, 9.8 ऐसे ही आएगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज सॉरी, Vg इज व्हाट? डी ओमेगा बाई, सॉरी क्या लिख रहे हैं, डी ओमेगा बाई डी क्या? स्लोप। तो कोई एक स्लोप ले लो, इसी को ले लेते हैं। ओमेगा इज 100 माइनस 90.25, ये ओमेगा 1 हो गया, ये ओमेगा 2 हो गया, ये K2 हो गया, ये K1 हो गया, and K2 by minus K1, so 10 minus 9.5, so this will be how much? 9.75 upon 0.5, so this will be double of it, so 19.5. So the approximate value of Vg upon Vp, it is approximately 2. Approximately this is 2, ठीक है। Approximately the value is 2. I hope you understand. Okay, और भी वैल्यू लेके देख सकते थे, रफली यहाँ पे यही वैल्यू आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। A box containing 2 moles of diatomic ideal gas, a box containing 2 moles of diatomic ideal gas at temperature T0 is connected to another identical box containing 2 moles of monatomic ideal gas at temperature 5 T0. There are no thermal losses and heat capacity of the box are negligible. Find the temperature of the mixture of gas. Okay. So you have two boxes, right? One containing 2 moles, other containing 5 moles. 2 moles of diatomic ideal gas and 2 moles of monatomic ideal gas. No, not 5 moles. 2 moles of diatomic and 2 moles of monatomic ideal gas, and they are exchanging heat, right? They are exchanging heat. Of course, they are not doing any work on each other.
They're not doing work on each other. So the heat will be simply given by so there is no work done on each other at macroscopic level. So this is 0. So dq is nothing but du, right? So we have 2 moles of diatomic gas. So diatomic at T naught, and we have 2 moles and 2 moles of monatomic, and this is a 5 T naught, and they are exchanging heat, right? So suppose after they reach equilibrium, suppose their temperature is T. So T will be of course more than T naught and less than 5 T naught. So if I talk about the heat gained by diatomic molecules, T naught वाला gain करेगा ना, ये lose करेगा, 5 T naught वाला lose करेगा. So heat absorbed by diatomic gas will be what? This is Q is delta U in fact, and delta U is NCV delta T. So Q absorbed, let's suppose the heat absorbed by diatomic gas will be equal to heat released or heat lost by monatomic gas, because that is at 5T, right? So heat absorbed will be what? 2 moles, and what is CV for ideal gas? You have 5 degree of freedom, so CV is FR by 2. So you have 5R by 2, and temperature change is T minus T naught. And heat lost will be, you have again 2 moles, and your monatomic gas. Monatomic gas has got degree of freedom 3, so 3R by 2 is CV. And we have 5 T naught minus T, right? So this 2 will cancel out, R will cancel out. So what do we have now? We have 5 T minus T naught equals to 3 5 T naught minus T. So we have 5T minus 5T naught and 15T naught minus 3T. Or we have 8T equals to 20T naught, or T will be 20 upon 8. So this is 50 का 20, sorry 4 5 20 और 4 दूनी 8. So 5 by 2 T naught. C will be the correct answer. C आपका सही आंसर हो जाएगा. Alright, ठीक है ये? Okay. So let's do the last one also. ये देखिए क्या बोल रहा है. The moment of inertia of solid cylinder of mass m, height h and radius r about axis shown in figure passes through center of mass and perpendicular to symmetry axis. ये अच्छा क्वेश्चन है. देखिए कैसे करोगे आप एक काम कर लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता नहीं है, तो इसको ऐसे एलिमेंट से बना हुआ देखो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो आप. इसको ऐसे एलिमेंट से बना हुआ देखो जिसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो. ये आपका सिलेंडर है, दिस इज एक्सिस. So what I can do is, let's take the element in the form of disk at distance x and thickness dx, right? So what would be the mass of this disk? Dm
dm would be rho into volume of this disk will be 2 pi x is the circumference into dx will be the volume. So, and rho is what? Rho is mass upon volume. I think I am committing a mistake. Volume is 2 pi r dx, right? Rho is mass upon volume, pi r square h and 2 pi r. So not 2 pi r, sorry. ये आपका surface area. Sorry. So rho into volume. Volume is rho is m upon pi r square h. This is rho. And disk का area क्या है? Pi r square into thickness. वो भी एक cylinder of radius r and thickness dx है. So this is pi r square dx. Now I am correct. Pi r square cancel. So this is m dx by h. This is your dm. And what is the moment of inertia about this axis for this element which is in the form of disk? You know one thing, that moment of inertia of this disk about this line is how much? 1 by 4 dm into r square. You know this? डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट 1 by 2 mr स्क्वायर होता है और डायमीटर के अलॉन्ग 1 by 4 mr स्क्वायर होता है. ये डिस्क का जो मास है वो dm है, तो dm इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा. अब इस एक्सिस के बाद क्या होगा? यू विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम. So the moment of inertia of this element about this axis is going to be simply, you apply parallel axis theorem, it will be 1 by 4 dm into r square and plus x square dm. This is your di. So this is if I integrate it like mass, your moment of inertia is also additive, and what can be added that can be integrated also, right? And dm is what? It was m by h into dx, right? So square m by h is mass per unit length, right? Into dx, and x is going from minus h by 2 to plus h by 2. So this will be 1 by 4 r square m by h, इसका इंटीग्रल x हो जाएगा और लिमिट पुट करेंगे माइनस h by 2 to plus h by 2, तो h आ जाएगा. So h cancels out. Here m by h will come out, and here you have, if you integrate it, it will be x3 by 3, and you just put the limit. So you put the limit, it will be 1 by 4 mr square plus m by h cube by 2 दूनी 4 दूनी 8 24, और फिर एक और ऐड होगा h cube by 24, तो h cube by 12 हो जाएगा. So this is 1 by 4 mr square plus mh square by 12. So I think this is your answer. ये आंसर. ठीक है? So we have used the parallel axis theorem. Okay, so I hope this is clear to you, and we have done this whole paper. पूरा पेपर हम लोगों ने कर लिया इसका. ठीक है? And year was JAM 2009. ठीक है? So I think now only few paper left. 5, 6, 7, 8 4 पेपर बचा हुआ है, वो भी कर लेंगे कल तक. ठीक है? कल तक उसको भी फिनिश कर लेंगे. So till then, thank you very much and prepare well. Okay, thank you.